We're going to study about male reproductive system. Important topics include primary sex organs, diseases, histology, spermatogenesis, and secondary sex organs. First, we're going to study about primary sex organs, which is also called gonads. In males, testes are the primary sex organs. अगर टेस्टिस की लोकेशन की हम लोग बात करें तो दे आर लोकेटेड एक्स्ट्रा एब्डोमिनली. Now the question arises why they are extra abdominally. It is because जो sperm का production होता है as well as maturation and storage requires 2 to 3 degree lower temperature than the inner body temperature. That's why it is located extra abdominally in the scrotum. Testes of a male baby are formed during 7 to 8 weeks of the pregnancy and are intra-abdominal. It means that embryonic stage में जब एक मेल बेबी होता है उसमें टेस्टिस का फॉर्मेशन 7 to 8 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में होता है, जो कि वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल नहीं, वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है. और प्रेगनेंसी के 7 to 8 मंथ्स में वो स्क्रोटम के टुवर्ड्स माइग्रेट होना शुरू कर देता है. Left testes hang slightly lower than the right. It means that जो लेफ्ट टेस्टिस होता है वो स्लाइटली लोअर होता है राइट के. दिस इज बिकॉज कि वो आपस में कोलैप्स ना करें. In this slides there are two diseases. First one is Cryptorchidism and second one is Inguinal Hernia. Let's study what is Cryptorchidism. Failure of testes to descend into scrotum. जैसे कि हमने अपने पिछले स्लाइड में पढ़ा कि 7 to 8 मंथ्स में जो टेस्टिस इंट्रा एब्डोमेन में होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमेन की ओर मतलब स्क्रोटम के टुवर्ड्स डिसेंड होना शुरू कर देता है. क्रिप्टोर्काइडिज्म वो केस है जिसमें जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में डिसेंड नहीं कर पाता है, या तो वो एब्डोमेन में ही रह जाता है या इन द मिडवे में, और वी कैन से दैट इंग्विनल कैनाल, और या तो वो बीच के पैसेज में ही रह जाता है, स्क्रोटम में नहीं आ पाता. As you are seeing in this figure, it is the overall percentage. ये परसेंटेज है कि 15% केसेस में होता है कि टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन में रह जाता है, एंड अगेन 25% में होता है वो इंग्विनल कनाल में ही रह जाता है, और हाई स्क्वाटर एरिया में 60% केसेस होता है, एंड नॉर्मल केसेस में वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाता है. एंड इट कैन बी यूनिलैटरल और bilateral, which means that unilateral means कि एक सिंगल टेस्टिस होगा जो डिसेंड नहीं हो पाएगा, एंड बाइलेटरल मीन्स दोनों ही टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं डिसेंड हो पाएगा. इस डिसीज़ को हम लोग सर्जरी के थ्रू सही कर सकते हैं, और द सर्जरी विच इज़ performed to correct Cryptorchidism is known as Orchitis. Let's move to the second disease, which is inguinal hernia. Failure of the closure of canal due to which loop of intestine can enter into inguinal canal. It means that inguinal canal का जो एरिया होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से क्लोज रहता है, और कुछ कनेक्टिव टिश्यू उसे नहीं वेल डेवलप्ड हो पाते हैं, उतने अच्छे से डेवलप नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो इंग्विनल कैनाल क्लोज नहीं होता है. जो स्क्रोटम का वी कैन से दैट हाई स्क्वाटर एरिया वो ठीक से क्लोज नहीं हो पाता है ड्यू टू अनडेवलप्ड कनेक्टिव टिश्यू. इसके कारण ये होता है कि जो इंटेस्टाइन का लूप होता है वो स्क्रोटम में एंटर कर जाता है, and which is really a painful disease, and it can be cured with the help of surgery. Next topic is castration.
Surgical removal of gonads. It can be both male or female. It means that जब हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं गोनाड्स को, एंड व्हाट इज गोनाड्स वी हैव स्टडीड, इट इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. जब रिमूव कर देते हैं उस प्रोसेस को कैस्ट्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कन्वर्जन ऑफ बुल टू ऑक्स. जब बुल को हम ऑक्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? बुल का जो गोनाड्स होता है, दैट इज टेस्टिस, उसको रिमूव कर देते हैं, जिसके कारण टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन भी नहीं होता और बहुत हार्मोन्स जो होते हैं जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन, इनका भी प्रोडक्शन नहीं होता है, जो एनिमल को डॉर्साइल बना देते हैं, मतलब लेस एग्रेसिव. And this we use for our commercial purpose, such as agriculture. We uses ox because it is less docile, it is easy to control by the farmers. In this slide we are going to study the histology of a male sex organ, that is testes. As you seen in this diagram, it is the inner view of a testes. टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग होता है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया से कवर्ड होता है, और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वो चैम्बर्स बनाते हैं इन द टेस्टिस. यू कैन सी इन द फिगर सेप्टम. इट फॉर्म्स चैम्बर्स इन which is called testicular lobules, and it has 200 to 250 lobules. Inside one lobules there are 2 to 3 seminiferous tubules. Seminiferous tubules are the structural and functional unit of testes. As you are seeing in the figure, the tube-like structure is called seminiferous tubules. And as you are seeing, these seminiferous tubules are opening towards the ready testes, which originates vasa efferentia. After that, sperm proceeds further. In this slide, we are going to study about pathway of sperm. This diagram is taken from NCERT. You can absorb it very properly because it's very important diagram. So, sperm जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई में जाता है, फिर रेडी टेस्टिस, देन इट्स गोज टू वासा एफरेंशिया, देन हियर इट इज रिटन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस. In this slide we'll study about seminiferous tubules are differentiated into two categories. First one is Sertoli cells and the second one is spermatogonium. Let's first talk about Sertoli cells. Then what is Sertoli cells? It's act as an outer covering, or we can say that protective layer to the sperm, which protects the sperm from the external environment around seminiferous tubules. It also helps in providing nutrition, metabolic waste, and also secretes the special type of hormone which is called EBP protein and rhinogen binding protein, which includes inhibin and mullerian inhibiting substances. And here, the spermiation is the process in which sperm is released from the membrane of Sertoli cells to the lumen of Sertoli cells. Seminiferous tubules. It means that sperm Sertoli cell के membrane से seminiferous tubule की lumen में release हो जाता है. Some points to remember. Number 1. Sertoli cells are the testis barrier for blood. It means that जो न्यूट्रिशन स्पर्म को ब्लड से चाहिए वो डायरेक्टली स्पर्म में ना जाकर के वो पहले Sertoli cells को क्रॉस करेगा, then Sertoli cells will provide the nutrition to the sperm. This happens because
जो हमारे बॉडी का इम्यून रिएक्शन है वो स्पर्म को एक्सटर्नल एजेंट समझकर डिस्ट्रॉय न कर दे, इसलिए पहले वो टेस्टिस के पास जाता है, देन इट्स गोज टू स्पर्म. Scrotum is lined by dartos muscle. Then what is the function of dartos muscle? Dartos muscle helps in the upliftment of scrotum during the cold temperatures. Cremaster muscle lined inside the wall of scrotal and inguinal canal help in elevation of testes. In this, we are going to study about spermatogenesis. What is spermatogenesis? It is a process of formation of male gametes, that is sperm. ये एक प्रोसेस है जो मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. उसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं. ये स्टार्ट होता है इन मेल्स, स्पेशली इन मेल्स. ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी में एंड it continues till death, but it doesn't happen in female. And with age, quality of sperm also reduces. Spermatogonia जो seminiferous tubules में present होते हैं वो मायोटेटिकली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और दे इंक्रीजेस इन नंबर, जो कि स्पर्मेटोगोनिया एक डिप्लॉइड का फॉर्मेशन करता है. और उनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया होते हैं जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं, जो कि डिप्लॉइड होता है. देन इट अगेन गोज टू meiosis 1, which is known as reduction division, which leads to the formation of two equal haploid cells, as you are seeing in the diagram. Just write. और ये जो टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बना है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, विच इज़ ऑलमोस्ट हैप्लॉइड. फिर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स again goes to meiosis 2. Meiosis 2 we called as spermatids. Again the spermatids are transformed into spermatozoa, and this process is called spermiogenesis. After spermiogenesis, spermation takes place. As you are seeing, the 4 equal haploid spermatids are formed, which are haploid. In this slide, we are going to study about secondary sex organs. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है गैमेट के प्रोडक्शन में, जैसे टेस्टिस इन्वॉल्व था. ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, मैच्योरेशन और स्पर्म के स्टोरेज में हेल्प करता है. एंड द ऑर्गन्स व्हिच हेल्प्स आर, फर्स्ट वन इज एपिडिडाइमिस, सेकेंड वन इज वास डिफरेंस, third one is seminal vesicles, fourth one prostate gland, fifth one Cowper's gland. As you can see, this figure is directly taken from the NCERT. All the organs are labeled here. You have to go through it by heart. As you're seeing, there is epididymis on the left side, then vas deferens, which originates from testes. Then you can see the seminal vesicle, which is present in pair. One is right side, another one is left side. Prostate gland and bulbourethral gland, which is known as Cowper's gland. You can see urethra, glans penis, foreskin, testes, and there are, I think, many more. Urinary bladder. Only
Seminal vesicles and Cowper's glands are present in pair. प्रोस्टेट ग्लैंड इज नॉट प्रेजेंट इन पेयर, ऐसा दिख रहा है फिगर में, बट ऐसा नहीं होता है। फिगर में इसलिए दिख रहा है क्योंकि बीच से यूरेथ्रा पास कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज सिंगल। सो फर्स्ट वन इज एपिडिडाइमिस. It is a site for the temporary storage of sperm. It is 7 to 12 meter long, highly convoluted tubules attached to testes. It is also site for maturity of the sperm and the motility of the sperm. Sperm can remain alive up to 1 month. Although sperm acquires motility in epididymis, मतलब कि स्पर्म को जो मूव करने के लिए मोटिलिटी चाहिए वो एपिडिडाइमिस में आ जाता है, बट फिर भी वो खुद से कभी मूव नहीं करते हैं unless and until they are not ejaculated. They are propelled by the fluid movement. वो खुद से मूव करना तभी शुरू करते हैं जब वो ejaculated हो और या तो फीमेल ट्रैक में हो. That's why here written sperm move on their own once ejaculated. Epididymis is also known as phagocytosis, which means the recycling center, which means that after 1 month sperm is destroyed by the epididymis. Next one is vas deferens, which is also called ductus deferens. So it is a secondary storehouse for the sperm. Here the sperm covers it partways by the peristaltic contraction. It is a contraction which includes relaxation, and then it contracts to move further, or we can say to move towards or forward. और वास डिफरेंस ये हेल्प करता है कि स्पर्म को एपिडाइमिस से आगे फर्दर प्रोसेस के लिए या फर्दर ऑर्गन्स के टुवर्ड्स ट्रांसफ़र होने में हेल्प करता है बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज सेमिनल वेसिकल्स. These secretes an alkaline viscous fluid. I think it is not visible here, but I'll dictate. Okay, these secrete an alkaline viscous fluid that contains fructose, which is monosaccharide sugar, prostaglandins, and the clotting proteins. Fructose is used for the production of ATP by sperm. Means fructose जो होता है वो ATP के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो स्पर्म को मूव करने में, फीमेल के ट्रैक रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मूव करने में हेल्प करे. एंड prostaglandins contribute to sperm motility. जो prostaglandins होता है वो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है, और ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में. And the clotting protein helps the semen to coagulate after the ejaculation. Fourth one is prostate gland. As we have discussed, it is not paired. It secretes a milky, slightly acidic fluid about pH 6.5 that contains several substances like citric acid, which is used by sperm for the production of ATP. Several proteolytic enzymes such as lysosome amylases eventually break down the clotting proteins from the seminal vesicles. Next one is Cowper's gland. It is paired one. This secretes an alkaline fluid into the urethra that protects passing sperm by neutralizing acids from the urine in the urethra. It means that Cowper's gland जो होता है एक अल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रेट करता है इनटू द यूरेथ्रा,
as we know that ki urethra is a common passage for sperm and as well as urine. So यूरिन जब यूरेथ्रा से पास होता है तो वो एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, इसलिए ये काउपर्स ग्लैंड अल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जो स्पर्म को प्रोटेक्ट कर सके एसिडिक नेचर से, नहीं तो सारे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. They also secrete mucus that lubricates the ends of the penis and the lining of the urethra, decreasing the number of sperm damage during ejaculation. Cowper's gland also secretes mucus that lubricates the end of the penis. और जो यूरेथ्रा का लाइनिंग होता है वो जो स्पर्म डैमेज होने वाले होते हैं उनका नंबर डिक्रीज करता है ड्यूरिंग द इजैकुलेशन. So it was the last slide. So finally I completed my project. It is a vote of thanks for my CONCEPTUM family and especially my biology teacher for giving this golden opportunity to work on this project, which help us to enhance our knowledge and creativity. I'm really thankful to him. Thank you.